Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhire Nashta Prayasha Vadareshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Ye tu ihasakta manasaha karmashu shaddayanvitaha kuruvanti aprati siddhani nityani api cha krishnanaha nityani api cha krishnashaha ye tu ihasakta manasaha karmasu shaddayanvitaha kuruvanti aprati siddhani nityani api cha krishnashaha ye tu hyasakta manasaha karmasu shraddhayanvitaha kuruvanti aprati siddhani nityani api cha krishnashaha. Let's start.
Yes. Yea, those who, to, but, iha, in this world, asaktam, addicted, manasaha, whose minds, karamasu, to fruitive activity, shraddhaya, with faith, anuvitaha, endowed, kurvanti, perform, aprati siddhani, with attachment to the reserve, nityani, prescribed duties, api, certainly, cha, and Krishna shaha, repeatedly. Persons who are too addicted to the material world execute the prescribed duties very nicely and with great faith. They daily perform all such prescribed duties with attachment to the fruit of reserve. Persons who are too addicted to this material world execute their prescribed duties very nicely and with great faith. They daily perform all such prescribed duties with attachment to the fruitive reserve. Hare Krishna, Suprema Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Purport by Divine Grace, A.C. Bhakti Vedanta Swami Prabhupada teaching. In this and the following 6 verses, the Srimad Bhagavatam criticizes persons who are too materially attached. It is enjoined in the Vedic scriptures that those who are attached to the enjoyment of material facilities have to sacrifice and undergo certain ritualistic performances. They have to observe certain rules and regulations in their daily lives to be elevated to the heavenly planet. It is stated in this verse that such persons cannot be liberated at any time. Those who worship demigods with the consciousness that each and every demigod is a separate god cannot be elevated to the spiritual world, or to speak of persons who are simply attached to duties for the upliftment of the material condition. Hare Krishna. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuramilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Nam. Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvisheshaya Sundravadi Pashyata Deshatarine. Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ye tu hyasakta manasaha Karmasu Shraddhayanvitaha Kuruvanti Apratisiddhani Nityani Apicha Krishna Shaha. Persons who are too addicted to the material world execute their prescribed duties very nicely and with great faith. They perform all such prescribed duties with attachment to the fruitive reserve. Hare Krishna. Write in the chat, my voice is clear. Oh, this is not working. Hare Krishna, Hare Krishna. Now it is better. Now I think it's improved. Okay. Hare Krishna. So we see here Kapila Muni is going back and forth. He is now taking 7 shlokas and explaining the life of materialistic person. And then he says, Tasmat, therefore, just worship Krishna. You get everything. When you worship Krishna, you get more material and spiritual assets. When you worship Devatas, you get only material assets. And therefore, the Bhagavatam says what? Bhagavatam says, Akama sarva kamo va moksha kama udaradihi tivrena bhakti yogena yajeta purusham param. Either we are akama, we have no desires, or we have sarva kama, we have all the desires. Akama sarva kamo va moksha kama udaradihi, or your desire for liberation. So mostly people are sarva kama. If you say, I'll fulfill your desires, there is no end to that. 1 million also is not sufficient. Sarva kama. Sometimes people go to Tirupati, they get darshan for 30 seconds only. And that is too short to ask all their list. ये भी हो जाना चाहिए, वो भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, हो गया दर्शन खत्म, अगेन कम इन द क्यू, है नहीं? भगवान के सामने कभी कभी बड़े मंदिर में थोड़े सेकंड्स मिलते हैं, उसमें 50 आइटम, ये भी दे देना, ये भी दे देना, ये भी दे देना, ये सर्व कामा. Akama means a devotee, no desire, no material desire. And moksha kama is the Mayavadi, the impersonalist. They just want to be liberated from the difficulties on this world. Rest in peace, rip, that's all. But they don't have an idea that beyond the material world, there is beautiful service to Krishna. Actually, this is information is very, very, very confidential. By the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Shri Radha Govinda ki. By the mercy of Shri Radha Govinda, Sri Chaitanya Mahaprabhu and Prabhupada, you can hear the sound of construction. It is actually music for Krishna. It is like kirtan. Because once Prabhupada asked, Prabhupada, can we bring the deities because some construction sound is there? They bring. Construction sound is like music for Krishna, है ना? Construction की आवाज एक कीर्तन की तरह है. Anyway.
सो ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है कि हमको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो गया, और इसकी वजह से हम समाज के बहुत बहुत ऊपर चले गए। एक तरह के व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जो अपने सब करते हुए निभाते रहता है, दूसरे तरह के आदमी की बात हो रही है, करते हुए निभाता है लेकिन देवी देवता की पूजा करता है, उनसे आशीर्वाद मांगता है, उनको भी भगवान ही समझता है। बहुत सारे लोग बड़े बड़े बड़े, मतलब कोई बता रहा था मेरे को, बड़े मेरे हस्बैंड बड़े ही श्रद्धा से सुबह देवी देवता की पूजा करते हैं, फिर 10 बजे से दारू पीना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग भी हैं, है ना, बड़ी बड़ी श्रद्धा से, बिल्कुल एक रूटीन होता है, इधर भी गए, मंदिर गए, भगवान को हार पहनाए, इधर गए उधर गए, बड़ा डिसिप्लिन से, फिर 10 बजे दारू पीना शुरू। ये भी करते हैं लोग। एंड आप सोचिए हाउ मच वी हैव बीन मेड फॉर्चुनेट बाय श्री चैतन्य महाप्रभु। नमो महावदन्याय, इज सो मर्सिफुल। कृष्ण प्रेम प्रदाय थे। अभी तो कहाँ कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम की स्मेल मिली हम लोग, बट जस्ट बाय दैट वी फाइंड द सोसाइटी सो, यू सी द कर्म कांड, most of the people are interested in karma kanda. Karma kanda, jnana kanda, kevala vishera bhanda. When Srila Prabhupada was on this planet, if any activity is to be done, he neither saw the vastu, neither any chart. Because, in fact, I remember when I brought the biggest vastu expert of this area to our temple, he said, first thing, you are worshipping Krishna, Adi Narayana, Supreme Narayana. Actually, you don't have to see any vastu, because all the directions are ending in him. But because you ask, I'll tell you something. But otherwise, you're not bound by anything. Similarly, people go to astrologers. An astrologer should not see, if he knows, he doesn't see hand of a devotee. Because the devotee is now coming under the protection of Krishna. Kala karma is not under bound by that. Kala karma, normal person is bound by kala karma. Therefore they run around. कौन सा दोष हो गया, नाग दोष हो गया, ये देवता देवा दोष हो गया, and they went to अपुइस, यहाँ भी भागते एस्ट्रोलॉजर। बिजनेस है। मेरे को पता चला था एक बारी, एक आदमी मेरे को बोला था, वो ज्योतिष था, और उसको बोलता था आपका ये दोष है तो आपको ये पूजा करानी है। तो पूछेंगे कोई मालूम है जो करेगा? हाँ, इसके पास जा, और 50% कमीशन होता है। बिजनेस है, बिजनेस। ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है, ये सब है कर्मकांड, बट भक्त को इन चीजों के पीछे नहीं देखता। We have instance of this in Krishna's Leela. What is the Leela? Govardhan Leela. All the residents of Vrindavan are worshipping Indra, who is one of the Devatas. Krishna told them, don't worship. Why? Better worship Govardhana. Govardhan is Krishna himself. Better worship indirectly, worship me. No need to worship. And then the residents of Vrindavan started worshipping Govardhan, plus started making arrangement. And Indra got angry. And he started throwing water like pralaya. So everybody went to Krishna. Krishna, now he is angry. Should we cool him down? Not needed. Not needed. My finger is enough to handle him. And left hand, one smallest finger. In all the 10 fingers, what is the weakest finger? Which weaker hand? Left hand. In left hand, which is the weakest finger? The small finger. So Prabhupada says, one small finger of Krishna was enough to handle all the tamasha of Indra. Krishna, even if the Devi Devata become angry, there is no need to worship them. You worship Krishna. Krishna will protect. We have that in the instance of Durvasa Muni also.
When Durvasa Muni and Ambarish Maharaj had a misunderstanding, Ambarish Maharaj had no problem with the pure devotee of Krishna, enjoying his worship to the Lord. Sa vai manah Krishna padara vindhayo vacham vaikunta gunanuvarnane karor harer mandir marjanadishu Shrutim chakara achyuta shatakathodaya Mukunda lingalaya darshana darsho. Like that it goes. Beautiful. I remember the 5 lines now. Just try to locate this and remember this verse. Because this is the life of a devotee. Sa vai manah Krishna padara vindayo. The first step in spiritual life is to put your heart at the lotus feet of Krishna. He is my maintainer. He is my protector. And just worship him. Sa vai manah Krishna padara vindayo. Vacham vaikunta gunanubhanane. And from the mouth, always talking about Krishna. Sa vai manah Krishna padara vindayo. Vacham vaikunta gunanubhanane. Karor harer mandira marjanadishu. With his hands, even the emperor used to personally clean the temple. Karor harer mandira marjanadishu. Shrutim chakara achyuta shatakathodaya. And from the ears, continuously hear about the Lord. Like that, every sense was used for the service of Krishna. And Krishna was so pleased. So when Durvasa Muni came, he became a bit envious of him because a devotee has one very interesting thing. He is totally happy and satisfied by worship to Krishna. In that nature, devotee is very independent. He is very happy and satisfied. Krishna is Atma Rama, fully satisfied in himself. A devotee is also Atma Rama by worshipping Krishna. Fully is happy and satisfied. But Durvasa Muni feels that, he has to be dependent upon him. But he's happy and satisfied. So Durvasa Muni, and he was very famous. I don't know what all the reasons. Somehow he became envious. You can think of various reasons he became envious of him. With the emperors, where people are worshipping him, he is happy, totally satisfied. When Sri Chaitanya Mahaprabhu Leela also, something happened, maybe something similar. Chaitanya Mahaprabhu told all the people, you do Harinam, that's enough. That's enough. No need of Karma Kandi, Jnana Kandi, Kevala Vishara Bhandi. All this astrologer, this lodger, that lodger, Bhanda. Waste. Don't waste your time. Just do Harinama Sankirtana. No need all this puja patha by these Karma Kandi Brahmanas. Don't waste your time. Correct? What happened? वो तो पूरे जॉबलेस हो गए सारे पुरोहित लोग कीर्तन कर रहे हैं खुश हैं पहले क्या है वही थोड़ा सत्यनारायण कथा करेंगे वही कुछ उपदेश देंगे इधर तो लोग खुद ही कीर्तन में खुश हैं कोई जरूरत नहीं है पैदाइशी ब्राह्मणों की ऐसा बोला नहीं लेकिन ऑटोमेटिकली ऐसा हो गया ना अब जब पेट भर गया तो कहाँ जाएगा फिर खुश है सब लोग कीर्तन कर रहे हैं सब घर में ही खुश हैं अब इनका तो दक्षिणा भाई बंद हो गई ये तो भूखे मर रहे हैं अभी पैदाइशी ब्राह्मण तो ये लोग तमाशा मचाना शुरू कर दिया इतना तमाशा कि चांद काजी के पास गए हरिनाम संकीर्तन रोकने के लिए देखो और क्या बोला अब चांद काजी तो मुस्लिम था उसको तो मैनेज करने का मेजॉरिटी तो हिंदूज है उसको क्या मालूम तो ये ब्राह्मण लोग टीम बना के गए हमारा धर्म का नाश हो रहा है सब अकाल पड़ेगा प्रलय आ जाएगा क्या हुआ नहीं भगवान का नाम हमारे शास्त्र में लिखा है खाली जब नदी में नहाते हैं उस समय जप करना चाहिए ये तो 24 घंटे कीर्तन करते हैं ऐसा और खाली ब्राह्मण लोग को जप करना चाहिए बाकी लोग को बैठ के सुनने का बस उनके लिए नहीं है खाली हम लोग जप करेंगे ऐसा तो दुर्वासा मुनि भी इसी तरह एनवियस हो गए थे फिर तो दूसरा स्टोरी तो देन व्हाट हैपेंड दुर्वासा मुनि ने क्या किया दुर्वासा मुनि ने एक दानव बनाया अपने बालों से और अम्बरीश महाराज को मारने का कोशिश की मतलब ऐसा पागल
ऐसा पागल हो गया आदमी ईर्ष्या में, एक भक्त की हत्या करना चाह रहा है। ठीक है, मतलब शॉर्ट स्टोरी को शॉर्ट कर रहा है, अभी बहुत तमाशा उसमें, एकादशी का तमाशा है। सो देन अम्बरीश महाराज बैठे रहे, वो ना इधर हिले ना उधर हिले, ना डरे। अपनी सेना को बोल सकते थे इसके युद्ध करो, वो बोले वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये मेरा धर्म नहीं है, क्षत्रिय ब्राह्मण पे हथियार नहीं उठाना चाहिए। जैसे परीक्षित महाराज भी हथियार नहीं उठाया था, शांत हो गए। भगवान आपकी जो इच्छा। इनको लगता है मेरे से कुछ गलती हो गई, ये मेरे को दंड देना चाहते हैं, स्वीकार है, दीजिए दंड। तो भगवान का अस्त्र आ गया, कौन? सुदर्शन। पहले उसने उस दानव को मारा, फिर दुर्वासा मुनि के सिर के पीछे भागा काटने के लिए, बदमाश। दुर्वासा मुनि देखिए, पहले ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा ने बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज ये विष्णु का अस्त्र है, मेरे मालिक का अस्त्र है। वो शिव जी के पास गए, जो वैष्णवानाम यथा शंभु, वो भी भगवान के दास हैं। माम किंग का रहा, तो चैतन्य महाप्रभु बचपन में बहुत नटखट थे कृष्ण की तरह, तो वो नहाने जाते थे, तो वहाँ बहुत सारे लड़कियां भगवान से प्रार्थना करती है ना कि मेरे को एक ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। तो चैतन्य महाप्रभु हंसते थे, और जो उनका पूजा का सामान था सब ले लेते थे, उनकी गार्डन लेते थे, और जो फल वल होते सब खा जाते थे। तो लड़कियां बोलते थे क्या कर रहे हो, छोटे थे तो, नहीं तुम किनकी पूजा कर रही हो, शिव जी और दुर्गा की, वो तो मेरे नौकर है। वो बच्चों एक्चुअली सच बोल रहे, वो तो मेरे नौकर है, फिक्र नहीं करो, तुमका अच्छा, सब कुछ अच्छा होगा। तो वो कंप्लेन करते थे जाके चैतन्य बाबू के घर में। लेकिन जब कंप्लेन करते थे घर में, तो चैतन्य महाप्रभु तो शक्तिशाली है, तो बोलते मैं नहाने कब गया, मैं तो इधर ही बैठा हूँ। बोलेंगे, क्योंकि वो तो हर दिन ऐसे ही करते थे। एनीवे, तो क्या जरूरत है, खुद ये कर्मकांडी लोगों को खेलते थे वो, क्योंकि जरूरत नहीं है ना, जब भगवान विष्णु है तो क्या जरूरत है। तो लेकिन ये ज्ञान दुर्वासा को नहीं है, वो भाग रहा है, ऐसा सोच रहा है देवी देवता के पास ही बहुत शक्ति है, कुछ नहीं कर सकते वो, भगवान की शक्ति के समान वो कुछ नहीं है, सब भगवान के किंग करा नौकर है। वैष्णवा नाम यथा शंभु, सबसे बड़े नौकर शिव जी हैं। लेकिन नौकर जब बोलते तो हम थोड़ा गलत तरह से सोचते हैं, नौकर मतलब उनके दास, उनके सेवक। तो भाई दुर्वासा मुनि तो सोच दोनों फेल हो गया, उन्होंने बोला भाई नहीं, विष्णु के अस्त्र के आगे मैं कुछ कर नहीं सकता, अब विष्णु के पास जाओ। शिव जी ने एडवाइस दिया, विष्णु के पास चला जाओ। तो भाग के विष्णु के पास, इतनी शक्ति थी कि एक साल में पूरा ब्रह्मांड घूम आए। ठीक है, तो विष्णु के पास पहुंचे। जब विष्णु लोक में पहुंचे तो उधर इतनी शक्ति थी, हम लोग के पास नहीं ऐसी शक्ति। तो विष्णु लोक पहुंचे तो विष्णु को उन्होंने समर्पित किया कि ऐसी हालत है, मेरी जान बता दीजिए, बचा दीजिए, आपका तो अस्त्र मेरी जान लेने वाला है। तो क्या बोला, तो उस समय व्हाट ही सेड कि अहम भक्ता पराधीनः, मैं तो भक्तों का सेवक हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। ऐसा नहीं मैं डिसाइड कर दिया, ऐसा नहीं हूं, मैं तो भक्त मेरे को जीत चुके हैं, मैं उनका दास हूं। तुम ऐसा करो, अम्बरीश से पूछो अगर वो क्या डिसाइड करना चाहते, मैं डिसीजन नहीं ले सकता, उनको डिसाइड करना। बहुत सुंदर श्लोक है, कुछ भक्त उनको याद करते हैं। तो उसके बाद दुर्वासा मुनि अम्बरीश के पास गए कि आप मेरी जान बचा सकते हैं क्या, सुदर्शन मेरे को मार देगा। तो आप देखिए कितना फर्क है दोनों में। और अम्बरीश महाराज सुदर्शन को प्रार्थना करते हैं, ये बहुत महान ब्राह्मण है, आप छोड़ दीजिए इनको, और अगर मैंने जिंदगी में कुछ पुण्य किया है, कुछ अच्छा किया है, तो आप इसको छोड़ दीजिए। मतलब अपना सारा पुण्य भी दे दिया उसकी जान बचाने के। जो आदमी आपको मारना चाह रहा है, सोचो इसमें क्या सीखने को मिलता है। पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि भक्त का हृदय में हमेशा शांति रहती है, बिकॉज उसको एक ज्ञान है, वो भगवान से सुरक्षित है। ये तो भक्ति की शुरुआत में होता है, आगे नहीं। नेक्टर डिवोशन की किताब उठाइए, पहला पेज पढ़िए, क्या लिखा है,
भक्ति के द्वार में घुसते ही क्लेशाग्नि, आदमी को शांति मिल जाती, किसी चीज से उसको भय नहीं लगता। ये एक क्या कहते हो स्वतंत्रता भक्ति की है, बहुत शांत। शांत कैसे होगा? भयभीत आदमी शांत हो सकता है क्या? कोई पॉसिबल ही नहीं। सारा भय निकल जाता है, भगवान मेरी सुरक्षा करते हैं। उसको हृदय में एक अनुभव होता है कि भगवान ने मेरे को स्वीकार किया, उसके सारा भय निकल जाता है, निर्भय। वीत राग भया क्रोधा, भक्त जब आध्यात्मिक से प्रगति करता है, राग अटैचमेंट निकल जाता है, भय निकल जाता है, गुस्सा निकल जाता है, शांत हो जाता है, बहुत शांत हो जाता है। तो आप देखिए अम्बरीश महाराज को गुस्सा आया? नहीं आया। क्या कर रहा है भाई, बदमाश? शांत। वीत राग भया क्रोध, कुछ नहीं, ना भय ना क्रोध, शांत। भगवान का स्मरण कर रहे थे, आपकी जो इच्छा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम कुछ करते नहीं है दुनिया में, जितना बुद्धि है हम लगाते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमको भगवान ही सुरक्षा करते हैं। ये हृदय में रहना चाहिए। इसलिए भक्त को जब भी भय लगता है, नरसिंहदेव को प्रार्थना करता है, ठीक है, क्योंकि मैं उनका आश्रम है। तो इस श्लोक में बताया गया है कि बहुत लोग हैं जो ये सब तो भाई बहुत बड़ी चीज है उनके लिए, और देवी देवता की पूजा करके सोचते हैं वो भी बराबर है। तुम लोग हरे कृष्णा कीर्तन करते हो, मैं काली 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 करता हूँ, सब बराबर है, क्या बात कर रहे हो, कोई फर्क नहीं। जबकि शास्त्र में लिखा है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, कीर्तन होता है विष्णु का। ये तो फिल्म वाले लोगों ने बनाए नए कीर्तन, जय गणेश देवा, ये कहाँ है भाई? शास्त्र में दिखाओ ना ये सब कहीं पे। नारद मुनि को इसलिए तो श्राप मिला था। नारद मुनि विष्णु की पूजा में बैठे थे, ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूरयः, सारे देवता लोग हमेशा विष्णु के चरण को देखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो विष्णु की पूजा हो रही थी, वही देवता लोग करते हैं। तो क्या हुआ? समथिंग हैपेंड एट दैट टाइम। व्हाट हैपेंड? नारद मुनि वाज डिस्ट्रैक्टेड एंड ही वाज सेइंग जय गणेश देवा, जय गणेश देवा। So at that time devatas gave shrap at him, become manusya, in a Shudra family. What shrap? So it is not something to be equated to worship of Vishnu. Yastu Narayana Devam Brahmarudradi Devatah Samattena Vishweta Sapashadi Bhave Dhruva. जो आदमी विष्णु की पूजा ब्रह्मा और शिव जी के बराबर कर देता है, इतना अपराधी हो जाता है कि उसको पाषंडी बोला जाता है। पाषंडी मतलब उसको कोई भी शुभ कार्य में बुलाना नहीं चाहिए। उसका चेहरा भी देखो तो नदी में कूद जाना चाहिए कपड़ों समेत, उसको पाषंडी बोलते हैं। अपराधी, पाषंडी अपराधी बोलते हैं। मतलब चेहरा भी देखना नहीं चाहिए, देख लिया तो नदी में कूद जाना चाहिए कपड़ों समेत, मतलब धोना अपने को, अपराधी। विष्णु की पूजा को कभी भी ब्रह्मा शिव या देवी के पूजा से कंपेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है आप चल रहे हैं शिव जी का मंदिर आ जाइए नमस्कार करिए, भगवान के महान भक्त हैं, लेकिन ये सोचना ये भी एक भगवान है वो भी एक भगवान है, ये मूर्खता है। इसलिए कृष्ण जी क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, खाली मेरी आश्रय ले लो। माम एकम, प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं रास्कल मी ओनली, बेवकूफ मेरी ही पूजा करो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब कृष्ण लीला को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कृष्ण जी ने पूरी लीला में यही बताया कि उनका आश्रय लेके हम लोग शांत हो जाते, खुश और शांत। एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगतः, अगर हम प्रसन्न मन में नहीं होंगे तो भगवान की भक्ति नहीं हो। भगवान का ज्ञान प्रकट करने के लिए, फॉर अस टू सी द नॉलेज ऑफ कृष्णा, फॉर अस टू बी एबल टू परसीव द नॉलेज ऑफ कृष्णा, वी शुड ऑलवेज बी प्रसन्न मनसा, हमेशा खुश। एवं प्रसन्न मनसा भगवद भक्ति योगतः, देन वी कैन अंडरस्टैंड भगवद भक्ति। भगवान को समझने के लिए पहले खुश होना जरूरी है। दुखी मन से भगवान को नहीं समझ सकते, करेक्ट? ट्रू?
Because Sattva is needed to understand God. And Sattva means Prasanna Manasa. It's very joyful. Evam Prasanna Manasa Bhagavad Bhakti Yogataha Bhagavad Tattva Vijnana Mukta Sangha Sajayate. Then you can understand Bhagavad Tattva, Krishna Tattva, Vishnu Tattva can be understood only by Prasanna Manasa, joyful mind. So we should always be happy. If we take shelter of Krishna, we will always be happy and peaceful. Devotee should not be disturbed. Devotee should always be happy. And we got such a great master, Krishna. Now we should be happy. We don't deserve. Do we deserve to get shelter of Prabhupada? Do we deserve to know about Prabhupada? Do we deserve to know about Sri Chaitanya Mahaprabhu? Do we deserve to know Chaitanya Mahaprabhu is Radha Krishna? Do we deserve to know all these things? These are very confidential conclusions of the Shastra. But it is revealed in our heart to some extent to us. It's not a bhava, it is some level of realization. Otherwise, you cannot stay on that every day. If it is only bhava, it will not stay more than half an hour. Somebody was mentioning yesterday, oh, I chanted, tears were coming. What was that? What was that? That is a bhava. And it went away, no? What we want is sthai bhava, constant remembrance. Sometimes by the trick of the mind or by some grace of Krishna, we feel some spiritual advancement. But it doesn't stay. But we want that to stay. उसमें लगता है कि 100 माला जप करते रहो तो ये नहीं जानेगा, ये नहीं जाने. वो कृष्णा आपको encourage कर रहे हैं. जैसे नारद मुनि को दर्शन दिया था ना, some encouragement Krishna gives. But as such, we want sthai bhava. Constantly we want worship of Krishna manifest in the heart. That is what our effort should be. Okay? And we should be very peaceful. So these people are always disturbed. It is said in the shloka very nicely. What is that? Bhukti mukti siddhi kami sakale ashanta Krishna bhakta nishkama ataheva shanta. Mostly people want sense enjoyment. They are always disturbed. Karmis. Mukti, the moksha kamis. They are also disturbed because they want something. Siddhi, the yogis want some siddhi. They can hypnotize somebody, they can do something. These are always disturbed. Bhukti mukti siddhi kami sakale ashanta Krishna bhakta nishkama. What is the definition of Krishna bhakta? Nishkam. He has no material desire. Ateva shanta. Why he has no material desire? Because the serving Krishna, his heart becomes purified. He has nothing more he wants. After attaining Krishna, there is nothing else you want. Therefore, we see this behavior in the devotees. We feel totally happy and satisfied. So we should stay on this platform. Prabhupada used to say, even if you are not feeling the love of Krishna, at least you should stay in Sattva-guna. It's very important as devotees. At least you should stay in Sattva-guna. If not in the waves and ripples, Muhu, Kalali. The Goswamis, when they were in Vrindavan, they were swimming in the waves of love of Krishna. Can't even imagine that consciousness. Correct? We should at least stay in Sattva-guna. Because Rajoguna means you will disturb somebody, Tamoguna you will hit somebody. Only a sattvic person is always happy and he doesn't give pain to anybody. Rasic person is disturbed, Tamasic person is mad. Tamasic will hit you, Rasic will abuse you, Sattvic will be gentleman. And because we are not Sattvic, we keep disturbing each other. And also it is Krishna is in control. Krishna is in control of the situation. So that way we also learn to, our own karma comes on us and we learn to reform ourselves. So in this shloka, Prabhupada is saying, very nice, normal condition in the middle world, that people are only busy improving their economic condition. What are people doing anyway? All people are working hard to improve their economic condition. है ना? 2 bedroom का घर है, 3 bedroom का हो जाए, है ना? So all the time people are worried, comparing, compare करते हैं, मेरे पास ये है, उसके पास ये है, मेरा भी वैसा हो जाए. पूरी जिंदगी
Even in spiritual life, it is not easy. We have not become 100% pure. So these things are still with us. We have those kind of material desires still within our heart. So our purpose should be to come out of this platform and by sincerely, why we have come to Krishna consciousness. Don't forget that. We have come to taste the sweetness of the holy name. We have come to relish the nectar of Srimad Bhagavatam. We have come to enjoy the beautiful darshan of the Lord. We have come to enjoy the sweet message of Srimad Bhagavatam. We should remember these are the things I have come. And I have come to serve Krishna. When I do that, definitely, Avashya Rakshibe Krishna. This faith we should have in the heart. Avashya Rakshibe Krishna. I have given my life to serve Krishna. Certainly He will protect me. What is that? But Krishna also says to Arjuna, Kaunteya pratijani name bhakta pranashyati. Arjuna, go and declare, my devotee is fully protected. They never be lost. In fact, Chaitanya Mahaprabhu Leela, but we are not fully surrendered. So to some extent our kala karma also hits us. But pure devotee, just like Pandavas, fully protected by the Lord. Because they are fully surrendered to the Lord. Prabhupada says the Pandavas by all good luck were totally surrendered to the Lord. That's what, they were not ideal parasites, they were working. They fought the Mahabharata war, not that they are sleeping, but they are totally surrendered to Krishna. Do like this? Yes, Krishna. Do like this? Yes, Krishna. They said in Mahabharata war, somebody went one day to see Arjuna in the night, and Arjuna was sleeping. Krishna, 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 Krishna. His heart is reverberating. Krishna, Krishna. He had nothing else in life. When Krishna disappeared from planet, Arjuna was inconsolable. He said, he was everything for me. So that is our ideal, no? To just be totally absorbed in Krishna. We should think, can I reach the platform of pure devotion of the Pandavas to Krishna? Narad Muni comes to congratulate Yudhishthira. They say, you are so fortunate that Krishna is your friend, Krishna is your messenger, Krishna is sometimes even your night guard. What else you want? You totally captured him by your love. So when you hear all this, and this is what becomes a goal, I want to become fortunate like that. One devotee said, I am not interested in anything. I will worship Nanda Maharaj because in his courtyard Krishna is playing. उनके घर में कृष्ण जी खेल रहे हैं, मैं तो उनकी पूजा करना चाहता हूँ. Because see, we should understand how fortunate he is. True? Now what happens, because we are living in the material world, we think fortunate person is he who has a lot of money. What is that fortune? He'll go away 2 more days, then he'll become a dog. Kya hai wo fortune? We should understand what is to be fortunate. The most fortunate person is a great devotee, pure devotee. There is no fame. Many people want to become famous. Okay, just think in this India itself. Who is the most famous? All of the devotees. Who is most famous in Karnataka? Kanakadasa, Purandaradasa, isn't it? Materialistic person, उनको याद भी करते हैं? नहीं करते. महाराष्ट्र में किसको याद करते हैं? तुकाराम को याद करते हैं. बंगाल में चैतन्य महाप्रभु डिवोटी फेमस है. जितना यश भक्त को मिलता है उतना यश किसी भोगी को नहीं मिलता कभी, है ना? सबसे फेमस. अगर फेमस ही बनना चाहते हो डिवोटी बन जाओ. Every angle you see, the life of devotee is most fortunate, even from material angle also. It's the most fortunate position. So once you see, then I want to achieve that. Otherwise, we compare, okay, I have this, that person has this. In what way a devotee is limited? Just a moment. People dream of material assets. So much they work hard for material assets. If I can have one car, people will go. Already we have temple is not done, we have 5 cars. कहाँ कर्मी कभी भी डिवोटी से कंपेयर नहीं कर सकता. कर्मी क्या 2 फीट के घर में रहता है, इधर तो ऑलरेडी 2000 स्क्वायर फीट का हॉल है, अभी 10,000 स्क्वायर फीट के 3 हॉल बन रहे हैं. कहाँ अगर कंपेयर भी करना चाहता है, कर्मी भी कंपेयर नहीं कर सकता. Krishna keeps devotees so comfortable, so So it is actually intelligent to become devoted. Therefore, Prabhupada says, Chaitanya Mahaprabhu says, Krishna ye bhaje se bada
Chatura is very intelligent, who worships Krishna. And then spiritual word, total freedom. Krishna shares his opulence with the devotees, isn't it? Sashti. He shares his opulence with the devotees. The devotee's life is very peaceful, happy, and most fortunate. And that is what we should try to do. Let us not compare, even as many people we are living, but are surrounded by all karmis. अरे उसके पास ये कार है, मेरे पास ये कार है, उसके पास ये मोबाइल है, मेरे पास ये मोबाइल है, उसका घर इतना बड़ा है, मेरा, अरे छोड़ो. दो दिन की दुनिया, we are very happy in Krishna consciousness. It is much more important than all this kind of, not interested. Devotee is not interested. Today a devotee may be in a big palace, huge temple, thousands of people are following him. Tomorrow he may go to some another town and start preaching. Correct? He is not attached to this. He wants to just preach Krishna consciousness. He is not attached to like a normal grahasthas. They accumulate opulence. है ना? अब ये भी हो गया. अब ये, this is not a wealth. Therefore, in the 16th chapter of the Bhagavad Gita, there is Daiva and Asura Sampat. Daiva Sampat and Asura Sampat. Asura Sampat is all these things. Money, wealth, respect, followers. This is Asura Sampat. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu says, Na dhanam, na janam, na sundari, kavitam, va jagadish kam, ye, mama janmani, janmani, shware, bhavatad, bhakti, etu. I don't know all these things. Devotee is not interested in. Krishna will test him. You change the situation and test him. What are you interested? I just want to serve you, Krishna. Okay? Mama janmani, janmani, shware, bhavatad, bhakti, etu ki tvai. Our intention is just to serve Krishna with pure devotion. The Bhaktivinoda Thakur says, my Lord, I don't mind taking birth again in this world, even as an insect, but keep me in the association of a devotee. That's all. The only thing a devotee aspires, live in association. That is extremely important. Because of our material desires, we have a tendency to be alone. That is material. Spiritual means he will never stay outside the association of devotee. That is protection. है ना, सुरक्षा है. भक्तों के संग के बाहर गए, सुरक्षा गई, है ना. कुछ गलत कर रहे हैं, कोई रोक तो सकता है ना. इधर कौन रोकने को, है ना. So always stay in association of devotees and chant Hare Krishna, read Srimad Bhagavatam and purify the consciousness, and that is the only mission of our life. We have no other mission. Srila Prabhupada ki, Srimad Bhagavatam ki. Hare Krishna, Neeraja Mataji has a question. Most sinful person in Kali Yuga are relieved from all sin when he truly surrenders to Krishna and under pure devotion. Yes, because Bhagavad Gita Krishna says, Sarva dharman parityajya mam ekam sharanam vraja. Hare Krishna. Thank you, everybody. Hare Krishna, Vancha Kalpatarupacha, Kripa Sindhubevacha, Patitanam, Pavanebhyo, Vaishnava Namo Namo. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Thank you very Krishna much. Prabhuji. Hare Krishna Thank you, Prabhuji. Prabhuji. Danda Pranam. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji, Dandar Pranam. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Thank you, everybody.